वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ PKQ एंड ए में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज 11 फुल लेंथ वाली। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ओके, first question is regarding the special category status in India. First statement is, it was first introduced on the recommendation of sixth Finance Commission. No, it's not in ये इंट्रोड्यूस सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन में नहीं किया गया था, फिफ्थ में किया गया था। ओके, so first statement is incorrect. And next is, Indian Constitution includes specific provisions for categorizing states as special category status. Is it true? No, it's not. ऐसा कोई ये नहीं है. Indian Constitution does not include specific provision for the categorization of states as a special category status. So statement second is also incorrect. Next is, the special category status are exempted from the customs duty, corporate tax and income tax. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C, which is only 3 is correct. Okay, and if we are talking about this special category status, it's a classification given by the center to assist the development of those states that faces geographical and socio-economic advantages. And ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1969 में, जब हमारा फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था। ओके, फाइनेंस कमीशन था। एंड ये सबसे अभी तो 1969 में किसको किसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिला था? तो वो था जम्मू एंड कश्मीर एंड असम एंड नागालैंड। ओके, नागालैंड। एंड देन आफ्टर बाद में किसको मिला था? तो लेटर मिला था सिक्किम, त्रिपुरा को। ओके, सिक्किम एंड त्रिपुरा को। और ये जो कैटेगरी रिसीव ग्रांट किया गया था वो किसके? गडगिल मुखर्जी फार्मूला के अकॉर्डिंग किया गया था। किसके? गडगिल मुखर्जी फार्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, सो और अगर इसकी हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल्स में ये मेंशन है? तो वो है 371A एंड 371A to 371H तक एंड 371J भी। ओके, एंड इफ we are talking about the recommendation of 14th Finance Commission, the special category status ceased to exist and thus no special category status has been granted to any state. इसके benefits क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के? तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है तो जो फंडिंग होता है सेंटर एंड स्टेट का फंडिंग वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इफ़ इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो उसमें डिवीज़न कैसे होता है? 90:10। 90% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एंड ये फेवरेबल दैन दी। और पहले ये क्या था, कैसे था? तो 60:40 था। ओके, या फिर 80:20। सो ये ज़्यादा बेटर होता है। और ये स्पेशल ये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए आता है। जनरल कैटेगरी में क्या होगा? 60% सेंटर एंड 40% स्टेट एंड या तो फिर 80% ये हो जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें कि जनरल कैटेगरी में 60% स्टेट देगा एंड 40% सेंटर एंड इसमें 80% स्टेट और 20% सेंटर। ओके, ये हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। ये फ़ायदा है क्योंकि इसमें 90% दे रहा है सेंटर स्टेट को। ओके, एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में और क्या है? फैसिलिटी दैट दी अनस्पेंड मनी, लाइक मान लीजिए हमको अभी 1 करोड़ मिला है। ठीक है, 1 करोड़ मिला जिसमें कि हम 80 लाख खर्च किए हैं। ठीक है, बट अभी भी हमारे पास 20 लाख बचा हुआ है, तो उसमें जो मनी मेरा बच गया वो लैप्स नहीं होगा, ये फर्दर
कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, ये एक फ़ायदा है। एंड नेक्स्ट इज 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट ऑल्सो गोज टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एंड दीज स्टेट्स कैन वैलिड द बेनिफिट ऑफ डेप्ट स्वैपिंग एंड डेप्ट relief schemes. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is which of the following article is associated with the Controller and Auditor General of India? Okay, कौन सा एसोसिएटेड है कैग से रिलेटेड, कौन सा आर्टिकल, तो वो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 148 इज द रिलेटेड टू द कैग. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अनदर वन विच इज, और ये कैग कौन से पार्ट में आता है? तो ये पार्ट 5 में आता है. ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिकल 40 जो कि रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू ग्रांट एडिशनल पावर दैट आर नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी. These powers are called the ancillary powers and are essential for the court to function as the independent and impartial institution. Okay, ये article 40 हो गया. And if we are talking about the article 142, it empowers the Supreme Court to pass any decree or order necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. Okay, and if we are talking about the article 143, it confers the president can ask for the opinion and advice of the Supreme Court on matters of public importance or certain laws that act as expedient to the constitution. The opinion or the advice of the court is not binding on the president. और ये advice जो है binding नहीं होगा. ओके, president पे जो कि सुप्रीम कोर्ट देगा. So answer is option number C, which is 148 article. Okay, next question is which of the following groups of persons are eligible for getting free legal service under the Legal Service Authority Act 1987? First is women and child development, correct. Member of STSC, correct. Industrial workman, disabled persons in custody. All of the above are correct statements. So answer for this question is option number D, which is all of the above are correct. Okay, let's come to the next question, which is and अगर हम इसकी बात करते हैं like लीगल सर्विस एक्ट अथॉरिटी की जो फ्री लीगल सर्विस दिया जाता है वो अंडर कौन से आर्टिकल में आता है? तो 39A के अंदर आता है. ओके, एंड इसमें क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फॉर द फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल आर्टिकल्स, जस्टिस फॉर ऑल. और ये कौन से? आर्टिकल 14 and 22 clause 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक द ऑब्लिगेटरी for the function to ensure equality before law and legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. Okay, और फ्री लीगल सर्विस में इससे पर्सन एलिजिबल फॉर गेटिंग कौन कौन सा हो जाता है? इसमें वुमेन एंड चाइल्ड, member of STSC, industrial workmen, disabled person and persons in custody. एंड इसके अलावा और कौन सा हो जाता है? victims of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster and person who annual income does not exceed 1 lakh. In the Supreme Court Legal Service Committee the limit is 5 lakh. and victim of trafficking इन ह्यूमन बींग्स और बेगर्स. ओके, ये सब उसके अंदर आते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding the National Informatics Center. Okay, first statement is it is an executive authority under the Ministry of Communication. Is it true? No, it's not a correct statement because the ministry, it's not a Ministry of Communication, it's Electronics and Information Technology. Okay, so Ministry of Information and Electronic
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स ई गवर्नेंस सपोर्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. Yes, it's a correct statement. Next is it is responsible for the impeachment of my government initiative. Yes, it's also correct statement. So answer for this question is option number C, which is only 2 and 3 is correct answer. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the protocol toxic shock syndrome, which recently seen in the news, which is correct. यहाँ पूछा इसमें से कौन सा. Okay, STSS is the severe infection caused by the bacterium known for its rapid progression. Yes, it's a correct statement. Next is it can be quite contagious and can spread to other through respiratory droplets or direct contact. Yes, it's a correct statement. So let's answer for this question is option number C, which is both are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following statements are correct regarding the provisions for the election to the state legislature in India. Okay, first statement is the Election Commission of India has the authority to conduct and regulate the state legislature election. Yes, it's a correct statement. Next is the Parliament of India can make provision with respect to the election of the state legislature. Yes, it's also correct statement. Next is state legislature itself has the power to legislate on matters related to the election. It's also correct. So answer for this question is option number D, which is all the above are correct. All statements are correct. Okay, and if we are talking about Election Commission of इंडिया, ये कौन से आर्टिकल कितने से कितने आर्टिकल तक आता है? तो 324 to 329 तक आता है. ओके, और ये कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 15 में है. एंड ये एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. एंड इसका टर्म जो है 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, ये होगा. एंड राइट टू वोट आप हमें बताएं कि कमेंट में कि राइट टू वोट हमें कौन से आर्टिकल के अंदर मिला है. ओके, कौन से आर्टिकल से हमें मिला है राइट टू वोट का अधिकार. ओके, ये हमें आप कमेंट में बताएं, क्योंकि हमने बहुत बार ये डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चंस में. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिलीज्ड द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, तो इसमें इंडिया का रैंक कितना है इस बार? तो इंडिया का रैंक है 93, सॉरी 193. इंडिया का रैंक कितना है? तो 129. ओके, 129 आउट ऑफ 146 कंट्री. 146 कंट्री में इंडिया का रैंक है 129. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं जो टॉप कंट्रीज़ है, वो टॉप कंट्रीज़ कौन कौन से? टॉप कंट्री तो वो कौन से हो जाएगा? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन. ये टॉप 5 कंट्रीज आ जाएंगे. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लीस्ट वन, लाइक सबसे लोवेस्ट या बॉटम जो सबसे ख़राब बोल सकते हैं, तो वो कौन से आ जाएंगे? वो आ जाएंगे हमारे और इसमें कितना 14 इंडिकेटर्स होता है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विथ रेफरेंस टू द टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्राई रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. द स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी दैट फिक्सेस रिवाइज टैरिफ्स फॉर टेलीकॉम सर्विसेज. इज इट ट्रू?
यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज, और इसका ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में. Next is, the chairperson of other members hold office for the term of 3 years until 65 years. Yes, it's also correct statement. So answer for this question is option number C, which is both are correct. Okay. Let's come to the next question, which is, consider the following statements about the UPSC chairman. Okay. First statement is, the chairman hold office for the term of a maximum 6 year or until the age 65 years, whichever is earlier. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is, the UPSC chairman enjoy a security of tenure. Yes, it's a correct statement. The president can remove the chairman UPSC for misbehavior. It's also correct statement. The chairman can relinquish his office at any time by addressing their resignation to the president. It's also correct statement. Okay, so answer for this question is option number D, all of the above are correct. Okay, next is, consider the following statements with reference to the power of election commission of India. Okay, election commission का power के बारे में पूछा और इसने यहाँ पे correct statement पूछा है. So first statement is, it has the power to register and deregister of the political party. No, it's not a correct statement. Let me tell you why later. तब तक next statement देख लेते हैं. It can withdraw recognition of a recognized political party. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. And if you are talking about the first statement, why it is incorrect? So election commission ऑफ इंडिया हैव द पावर टू रजिस्टर बट डी रजिस्टर करने का पावर नहीं होता है. ओके, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट हो गया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, with reference to the provision related to use of languages of official purpose in India. First is, English was used for all official purposes of union for 10 years starting from the commencement of the constitution. No, it's not a correct statement. Okay, next is, official language act 1963 mandate the use of English for communication between union and non-Hindi state. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct answer. And if you are talking about this one, why it's incorrect, because अगर हम बात करते हैं इसका, ये 10 ईयर नहीं था, ये कितना था, तो ये 15 ईयर था. ओके, कब से, 1950 टू 65 तक. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, consider the following agreement in the post independence era. First is, Simla Agreement, Treaty of Peace and Friendship between India and Soviet Union, Tashkent Agreement, Bandung Conference. Chronological order of the above event starting from the earliest. Okay, सो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा अर्लियर आया था एंड क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो फर्स्ट आया था, सबसे पहले शिमला अग्रीमेंट का अगर हम बात करते हैं तो वो कब से कब ये किया गया था, तो 1972 में. एंड फ्रेंडशिप बोला हो गया 71 में. एंड ताशकेंट अग्रीमेंट 1966 में. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, बुंदू कॉन्फ्रेंस विच इज हैपेंड इन 1955. ओके, 1955. ओके, सो अगर इसको हम क्रोनोलॉजी में लगाना चाहते तो पहले आ जाएगा 4, 3, 2, 1. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज करेक्ट. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बुंदुंग कॉन्फ्रेंस, ये एशिया अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन बुंदुंग, इंडोनेशिया. लैंडमार्क इवेंट था, मार्क द फर्स्ट लार्ज स्केल मीटिंग ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन स्टेट्स, मोस्ट ऑफ विच हैड रिसेंटली गेंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉलोनियल रूल. उसके बाद ये किया गया था कॉन्फ्रेंस. ओके, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था. एंड अगर हम बात करते हैं उसके बाद ताशकेंट अग्रीमेंट का,
तो ताशकंद एग्रीमेंट किससे हुआ था 1966 में। इंडिया एंड पाकिस्तान साइन किया था ताशकंद एग्रीमेंट ऑन जनवरी 16 1966 एज अ पीस ट्रीटी टू एंड द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 ओके। और इसके वजह से नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज से इसमें किया गया था ओके। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विच हैज happened in 1971 between Russia and India okay। And if we are talking about the Simla agreement which happened in 1972, Simla agreement signed on 2nd of July 1972 between India and Pakistan was aimed to establish durable peace and normalizing relations following the 1971 war okay। और ये कहाँ पे कमिटी हुआ था रिस्पेक्ट the line of control in Jammu and Kashmir okay। Next question is in the context of Mahatma Gandhi National Rural Employment Manrega 2005 consider the following statement इसमें correct कौन सा okay। First is this scheme is implemented by the Ministry of Panchayati Raj, is it true? नो इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था, रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ना कि पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द एक्ट गारंटीड 180 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टू रूरल हाउस होल्ड, it's not 180 days, it's 100 days only okay। So statement second is also incorrect। Next is the act mandates that at least half of the beneficial shall be women, no it's not a half, it's a 1/3 women okay। So statement third is also incorrect। So answer for this question is none of the above is correct okay। Let's come to the next question which is the e-government department index is released by which of the following, which is the answer of United Nations Public Administrative Program okay। Let's come to the next question which is consider the following statements, following countries like India, China, South Korea, US, Japan, how many above the are the part of biopharmaceutical alliance which are recently launched। तो इसमें से इंडिया है, चाइना नहीं है, साउथ कोरिया, यूएस, जापान, सो ऑल 4 हो जाएगा एक्सेप्ट चाइना ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to model code of conduct MCC consider the following statement, how many of they are correct okay। So first is MCC is a set of guidelines laid down by the Election Commission of India to govern the conduct of political parties and candidate, is it true? Yes, it's a correct statement। Next is it governs by the model code of conduct rule 1960, no it's not under this। So statement second is incorrect। MCC was first introduced in the Kerala, yes it's a correct statement okay। And if you are talking about the statement second governed by the MCC, nahi, so MCC does not have any statutory backing and it is more consequences driven code and it is not enforceable by law, but some provisions are enforceable through corresponding provisions in status like Representation of People Act 1951 okay। So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct okay। Next question is cases related to which of the following crimes can be handled by the CBI। First is anti-corruption crime, correct। Next is economic crimes, yes अगर मनी लॉन्ड्रिंग CBI के द्वारा नहीं होता। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, only 1 and 2 are correct okay। Let's come to the next question which is which of the following commission are associated with the police reform in post independence India। First is करेक्ट आंसर ऑफ द कोड ओके। रामनाथ कोविंद नहीं, ये सेंट्रल स्टेट सॉरी ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला से रिलेटेड है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ये हट गया, ये हट गया। अब 2 और 4 तो कंफर्म सही है, बट लेट मी सी रायबेरो कमेटी, ये भी सही है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज 2, 3 and 4 are correct and 1 are incorrect okay। Let's come to the next question which is consider the following regarding the Right to Information Act RTI के बारे में।
in 2005. Which one is correct statement? Okay, so first is the Directorate of Enforcement, Narcotic Control Bureau, National Security Guard, Indo-Tibetan Border. How many of the organization are exempt from the providing information under the RTI? So answer for this question is all four. All are exempted from the RTI. Okay. And next question is, which of the following provisions were introduced by the 97th Constitutional Amendment Act 97th Constitutional Amendment Act? First is, establish the right to form cooperative society as a fundamental right. No, ये fundamental right तो नहीं होना चाहिए. So statement first is नो, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, फंडामेंटल राइट. और ये कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? तो आर्टिकल 19 में. ओके, 19. So first statement is correct. Add a new part 9A to the constitution. No, it's not 9A, it's 9B. So second statement भी incorrect. Okay, and empower parliament to enact laws governing multi-state cooperative society. So third statement is correct. And if you are talking about the fourth one, which is provide that the state cooperative are the central subject under the Constitution of India. No, it's not a correct statement क्योंकि ये state government का आ जाएगा. Okay, the state subject under the Constitution. So answer for this question is option number C, which is 1 and 3 are correct. Okay, and if you are talking about the DPSPs में भी है तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 43B. Okay, let's come to the next question, which is, according to the Representation of People Act 1951, which of the following groups of people is not allowed to vote? कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को अलाउ नहीं था वोट का? फर्स्ट इज पर्सन अंडर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट. yes, it's a correct statement. Person in the lawful custody of the police. Yes, it's also correct. And person under preventive detention. No, it's not a correct. So answer for this question is option number A, which is 1 and 2 are correct only. Okay, let's come to the next question, which is, consider the following statements with reference to the public enterprises selection board. Public enterprises selection board. First statement is, और यहाँ पे correct पूछा है, it is a high powered body under the Department of Personnel and Training. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is, it advises the government on appointment to the top management post in central public sector enterprises. It's also correct statement. Next is, it is headed by the Secretary of the Department of Investment and Public Assessment. No, it's not a correct statement. So answer for this question is option number A. Only 1 and 2 is correct. Okay, let's come to the next question. Consider the following tools: social audits, participatory budget analysis, community scorecard, and citizen charter. How many of the above tool enhance social accountability? इसमें से कौन सा करता है? तो all 4 हो जाएगा. Okay, next is, with reference to the corporate social responsibility rule in India, consider the following statement. First is, the corporate social responsibility spending is applicable to companies incorporated in India as well as a foreign company having its office in India. Yes, it's a correct statement. Next is, the companies are required to spend a minimum 2% of average net profit for the preceding 3 financial years of CSR activities. Yes, it's also correct. Next is, non-compliance with CSR provision is a criminal offence. No, it's not a correct statement because non-compliance with CSR provision has been decriminalized by the shifting such offences to penalty regimes.
Okay, so statement third is incorrect. So answer for this question is option number A, which is only 1 and 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is it was a spontaneous mobilization of women demanding a ban on the sale of alcohol in their neighborhoods. It started in Andhra Pradesh in 1990. It touches upon larger social, economic, political issues of the regions that affected women's life. Which of the following is being described in the passage given above? तो ये कौन सा हो जाएगा? गुलाबी गैंग, sorry, not गुलाबी गैंग, it's related to anti attack movement. Okay, anti attack movement. And if you are talking about the गुलाबी गैंग, गुलाबी गैंग किस तो सेल्फ एम्प्लॉयड, लाइक नो, गुलाबी गैंग कहाँ पे हुआ था? बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एज द रिस्पॉन्स टू वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक अब्यूज एंड अदर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं सेवा की, सेवा जो कि सेवा मूवमेंट थी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन. सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन जो कि वुमेन्स का ट्रेड यूनियन था, एंड जो कि वुमेन्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था. कहाँ पे? गुजरात में. एंड ये गाइडेंस किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीमती एला भट्ट. कौन थी? श्रीमती एला भट्ट इन 1972 में. एंड ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन हो वुमेन वर्कर का इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी. ओके, so let's come to the next question, which is consider the following statements about the social audit in India. Social audit in India. First statement is it is it is the examination and assessment of a program to scheme with active public involvement, comparing of official records with actual ground realities. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is social audit has been made mandatory under the Manrega, which is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Yes, it's also correct. Next is Meghalaya is the first state in India that has implemented social audits. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C. All three are correct. Okay. Let's come to the next question, which is recently India and Iran signed a 10-year contract cooperation at Chahbar port. It is a deep water port situated in the Gulf of Oman. Yes, it's a correct statement. और आप हमें कमेंट में ये बताएं कि पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं. ओके, सो इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज correct. And next is it is only Iranian port with direct access to Arabian Sea. It's also correct. So answer for this question is option number D. Neither 1 neither 2 is the not correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following statements best describe the faster initiative sometime in news. faster initiative को कौन सा best describe किया है? So first is it is initiative to enhance the speed of internet connectivity across rural areas in India. No, it's not a correct statement. Next is it is a scheme to accelerate electric vehicle adoption and infrastructure development in majority cities. No, it's not a correct. It is an initiative aimed at enabling the Supreme Court to transit court order securely and instantly. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C is the correct. Okay, let's come to the next question, which is and if we're talking about the some important facts about the faster in this context,
Chief Justice of India, which is the former Chief Justice of India right now, because ये अभी रिटायर हो चुके हैं और इनके जगह पे कोई और आया है. सो आप हमें अभी रिसेंटली जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं. ओके, सो जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे, अश्योर किया था द्रौपदी मुर्मू को दैट द सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू सिंप्लीफाई लीगल प्रोसेस एंड रिड्यूस प्रिजन ओवर क्राउडिंग. ओके, क्योंकि जेल में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन पार्टी बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी. तो उसके लिए क्या क्या मैंडेटरी है स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने के लिए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ इट विन्स 3% ऑफ द सीट in the legislative assembly at the general election to the legislative assembly of the state concerned. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is if it secures 6% of the valid votes polled in the state at general election to the legislative assembly of the state and addition one seat win in the assembly of that state. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये 1 सीट नहीं होगा. यहाँ पे 1 सीट की जगह 2 सीट उसको विन करना पड़ेगा, मतलब जीतना पड़ेगा 2 सीटों से. सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इन करेक्ट. नेक्स्ट इज इफ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट that state. Okay, so statement third is correct. So answer for this question is option number C, which is 1 and 3 are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the Prime Minister Award for Excellence in Public Administration. First is it was instituted on the recommendation of the Second Administrative Reform Commission. Is it true? No, it's not a correct statement because it was instituted by the Prime Minister Manmohan Singh in 2006. So statement first is incorrect. Next is all officers of the central and the state government, individuals or as organization are eligible for this award. Yes, it's a correct statement. Next is the award was given only for the implementing identifying priorities programs and government of India. No, it's not a correct statement. So first statement is so the first statement was incorrect because the Prime Minister Award for Excellence in Public Administration was instituted in 2006. Then the Prime Minister of by the Dr. Manmohan Singh at that time. Okay, they were not instituted on the recommendation of the AR second. And if you're talking about second ARC recommendation, similar award for recognizing good performance at the state and district levels. Okay, so first statement is incorrect. And if you're talking about the statement third, which is at the award was the award was given every year for excellence in implementing identified priority programs of Government of India and extraordinary and innovation work done by the organization of central and state government districts in public governance. So statement second is also third is also incorrect. So answer for this question is option number C, which is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is how many of the above are correctly matched. Okay, first is Junagadh and Hyderabad and Manipur. Junagadh was places is conducted among people. Yes, it's a correct, not correct. Hyderabad following a policy action by the Indian government and Manipur by signing of instrument of accession. So ये आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज़ करेक्ट. सॉरी गाइज, थोड़ा नॉइज़ होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी पर्पस ऑफ द Pravah portal recently unveiled by the Reserve Bank of India.
So which one is correct? To provide retail investors with access to government security? No. To offer online platform for applying regulatory approvals? Yes, it's also correct statement. Okay, so answer for this question is option number B. Only two, option number B is the correct answer. Let's come to the next question, which is next question. Consider the following statements regarding the electoral rules. Okay, electoral rules. First statement: the Representation of People Act 1951 provided for general election roll and separate electors. Yeah, is it true? No, it's not a correct statement. Let's come to the next statement, which is एंड ये करेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्राइमरली डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड डिलिमिटेशन of the constituencies for election, the qualification of voters and preparation electoral rolls. Okay, ना कि इससे electoral roll को separate करता है. So first statement is incorrect. Next is the general elector rolls include all eligible voters residing in the country, while separate electoral roll include eligible voters residing outside the country. Is it true? No, it's not a correct statement, because the general electoral rolls encompasses all eligible voters in a constituency, while a special electoral roll caters to specific category of voters such as overseas electors and service voters, not the outside the country. Okay, so statement second is also incorrect. Let's come to the next statement, which is the Constitution empowered the Election Commission of India to prepare and maintain electoral roll. It's correct statement. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements about the corruption perception index in 2023. Corruption perception index score ranges 0 to 100, with higher score indicating higher level of corruption. No, it's not a correct statement, because ये lower level का दिखाएगी. अगर score ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका level कम है. Okay. So first statement is incorrect. Next, India has improved its rank CBI 2023 as compared to 2022. No, it's not a correct statement, because ये decrease किया है. Okay, decline हुआ है. So second statement is also incorrect. And if we are talking about the corruption perception index, वो total 180 countries ये करता है, जिसमें से इंडिया का रैंक है. इंडिया का रैंक कितना है? तो 93 आउट ऑफ 180. ओके. एंड अगर हम बात करते हैं टॉप कंट्रीज़ की, और पहले 2022 में इसका रैंक कितना था? तो वो था 85. सो ये डिक्रीज़ हुआ है अगर हम देखें तो. एंड फर्स्ट मतलब जो टॉप कंट्रीज़ है वो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड सिंगापुर एंड स्वीडन है. एंड अगर हम बात करते हैं बॉटम मोस्ट, अपेरेंटली सीरिया, साउथ सूडान, वेनेजुएला, तीनों का स्कोर कितना है? तो वो होगा 13. एंड सबसे ख़राब स्थिति किसका है? तो वो हो जाएगा सोमालिया का, जो कि ओनली 11 स्कोर किया है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ neither 1 neither 2 is the correct answer. Let's come to the next question, which is Council for Advancement of People's Action Rural Technology is an autonomous body under the Ministry of Rural Development. Which of the following are not objective of the CARPAT? Okay, so first statement is to act as a catalyst for the development of technology in appropriate for rural area. Is it true? No, it's not a correct statement. So next is to support the district administration in sustainable development of rural NGO and voluntary organization. It's a correct statement, because यहाँ पे पूछा है incorrect one, and this one is incorrect. Okay, and if we're talking about the first one, it's a correct statement for this question. Okay,
first statement is correct but not the correct answer for this question. Second is the incorrect, and that's why it is a correct answer for this question, because there is asking about not an objective of the carpet. Okay, and if we are talking about the statement second, which is initiative are not channelized through the state department and district administration. Monitoring, evaluation and selection of NGOs is done directly by the carpet headquarter and its regional offices. Okay, so if we're talking about the statements C and D, which is also are correct, so let's see. To encourage, promote and assist voluntary action for the implementation of project intending enhancement of rural prosperity, yes, correct. Next, to plan project aimed at creation of employment opportunity and promotion of self-reliance in rural areas through voluntary action, ये भी सही है. So answer is option number D for this question. Okay, let's come to the next question. How many of the commission or committees are related to the electoral reform? Okay, first is Goswami committee. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is Vohra, Indrajit, and second administrative reform administration. It's also correct. So all of the above are correct. So answer for this question is option number D is the correct answer. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. First statement is the decision of the National Green Tribunal only be appealed direct of the Supreme Court. No, it's not a correct statement क्योंकि ये हाई कोर्ट में भी होता है. So first statement is incorrect. Next is NGT was established with the dedicated jurisdiction in the environmental matters to provide speedy environmental justice. Yes, it's a correct statement. Okay, so answer for this question is option number D, which is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following best describe the blood minerals? So what is the blood minerals? Okay, कौन सा अभी करेक्ट होगा? मिनरल दैट आर लीगली ट्रेडेड एंड वेरीफाइड इंटरनेशनल एजेंसी. नो. मिनरल दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाईटेक डिवाइस लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप. नो. मिनरल्स दैट आर माइंड इन कॉन्फ्लिक्ट जोन and are associated with severe human rights violation. Yes, it's a correct answer for this question is option number C is the correct. Okay, let's come to the next question. Which terms won ICC T20 World Cup at least 2 times? वो कौन कौन सा हो जाएगा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर नॉट सी, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इंडिया, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज जो कि एटलीस्ट 2 बार ICC T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज which of the following is an attached office to the Niti Aayog? Attached office to the Niti Aayog. Okay, first statement is the Council of Advancement of People's Action and Rural Development. No, it's not a correct statement. Next is the Development Monitoring and Evaluation Office. Yes, correct. National Institute of Labor Economic Research and Development. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Only 2 and 3 are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following. First statement is, and there is asking about the function of the National Commission for Scheduled Caste. Okay, first statement is to investigate all matters relating to the constitutional and other legal safeguard for the ST and SC. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि ये फंक्शन करेगा सिर्फ SC के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्या फंक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट. ओके, एंड आपको पता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पहले सारा एक ही में होता था, बट उसको अलग कर दिया गया था बाद में. ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट सेकेंड, सो टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लायंस with respect to the deprivation of the right and safeguard of the scheduled caste and scheduled tribe. No, it's not a correct क्योंकि इसमें भी scheduled caste के लिए सिर्फ होगा and scheduled tribe के लिए सारे में अलग हो जाएगा. To make recommendation, so to make recommendation as to measure that should be taken by the union for effective implementation of safeguard of the SC and ST. ये भी
गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एसटी का दे दिया जबकि एससी का सिर्फ होगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड आर्टिकल कौन से आता है में 338 में आता है। ओके, एंड इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ? सो फर्स्टली इट वाज ओरिजिनेटेड इन अंडर आर्टिकल 338 प्रोवाइड्स अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इसमें दोनों था। ओके, एसटी एंड एससी दोनों थे इसमें। बट लेटर क्या हुआ कि विद द 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिसमें 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इसको बफरकेट कर दिया गया। ओके, 2 सेपरेट बॉडी बनाया गया जिसमें से एक हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड दूसरा हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ओके, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो अंडर आर्टिकल 338 में ही रह गया, बट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए एक अलग आर्टिकल इंक्लूड किया गया। वो कौन सा? 338A। ओके, और इसके फंक्शन क्या है? तो इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, रिपोर्ट टू दी प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडेशन, ये सारे इसके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ये सभी इसके फंक्शन हो जाएगा। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द रीऑर्गेनाइजेशन Commission 1953 consider the following statement. First is the Commission recommended the reorganization of the state boundary primarily based on the economic viability and administrative convenience rather than linguistic. Is it true? No, it's not a correct statement. Because अगर हम बात करते हैं the State Reorganization Act Commission primarily recommended the reorganization of states boundaries based on the linguistic lines through the consideration of economic viability and administrative convenience were also taken into account of the SRC's main aim, और इसका aim क्या है? To align state boundaries with linguistic and cultural identities that promote administrative efficiency and the regional unity. Okay, so first statement is incorrect. Next is this resulted in the creation of 14 state and 6 union territories. Correct. So answer for this question is option number D is the correct answer. Okay, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Next is which of the following statement is not correct regarding the Finance Commission of India. फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा है। ओके, सो फर्स्ट इज इट रिकमेंडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग of taxes between union and state. It's correct. It's recommended the principle to the followed by the center while giving grant in aid to the state out of consolidated fund of India. Correct. Next is recommended the distribution of net proceeding taxes and पंचायती राज इंस्टीट्यूट. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है ना कि सेंटर. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. आज के लिए इतना ही क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है तो आपको भी दिक्कत होगी. सो थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.